So today we will do the next theorem related to the Cauchy sequences. Every compact metric space is complete. What does it mean? Every compact metric space is complete. It means if we have a Cauchy sequence in a compact metric space, then it is convergent. So statement को आप 1, 2, 3 किसी तरीके से भी represent कर सकते हैं. So I'm writing every Cauchy sequence in compact metric space is convergent. Right? Every Cauchy sequence in a compact metric space is convergent, or we can say that every compact metric space is complete. Complete का मतलब क्या है? Complete means अगर कोई आपने Cauchy sequence ली है किसी compact metric space में तो वो क्या होगी? Convergent. Otherwise result क्या था? Otherwise था every convergent is Cauchy, but Cauchy may or may not convergent. लेकिन अगर वही Cauchy सीक्वेंस किसी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर आ जाती है तो वो क्या हो जाती है? कन्वर्जेंट. सो लेट्स स्टार्ट. लेट Pn be a Cauchy sequence in compact metric space Xt, right? For n is equal to 1, 2, 3 dash dash dash, let the sets En be defined है. सबसे पहले हम nth scale से ei set को define करेंगे. Number 1 E1, E2, E3 क्या sets बनेंगे हमारे पास? E1 elements will start from first element x2, x3 dash dash dash. E2 is equal to x2, x3, x4 dash dash dash. E3 is equal to x3, x4 dash dash dash, right? So if I have taken the sequence P, then they will be in terms of P. ये सारे के सारे in terms of क्या होंगे? P होंगे. They are in terms of P. In terms of P. Because as I have written in terms of X, they are in terms of P because we have taken the sequence Pn. So internal En is equal to, I am writing in P, this is Pn plus 1, Pn plus 2, see, they all are P's, not X, as I have taken the sequence P, right? So next is, now, Pn is a Cauchy sequence. Next क्या है? Pn given लेके चले हैं since Pn is a Cauchy sequence. Pn is a Cauchy sequence. Pn is a Cauchy sequence. So beta, we have already proved that if we have a Cauchy sequence, then the limiting value of the diameter is tending to 0. Diameter of En is equal to, we have already proved that. ठीक है जी? It implies limiting value of diameter of En clear is also equal to 0, because we have proved that the diameter of En, because we know that the diameter of En clear is equal to diameter of En, right? Now, what is En clear? En clear is the set of all adherent points, and it is always a closed set. Closure of a set is always a closed subset of a compact metric space Xp, right? It implies En closure is a compact set, because every closed subset of a compact set is compact. Therefore, En closure is a compact subset for all n. So whatever Ens we have taken, they all are compact sets. Now we have, so just see the formation of E1, E2, E3. So इनकी जो फॉर्मेशन है वो ये क्या बता रही है कि हर आने वाला जो सेट है वो पिछले वाले में कंटेन है इस तरह से. ठीक है जी? एंड वी नो दैट इफ A is a superset of B, then A closure is a superset of B closure. It implies
A Cloyer, it implies E1 Cloyer is a superset of E2 Cloyer is a superset of E3 Cloyer dash dash dash, right? it implies अब आपके पास En Cloyer की जो properties हैं वो क्या होगी? It is a sequence of compact sets in capital X such that every coming set is contained in the previous set. ये decreasing इसका trend है, ठीक है? और limiting value of the diameter of En Cloyer is equal to 0. So then by the previous theorem, the intersection of En diameter, En Cloyer, intersection of En Cloyer contains exactly 1 point. ठीक है जी? So there exists a unique point P belongs to X such that P belongs to intersection and running from 1 to infinity En Cloyer. It implies P belongs to En Cloyer for all n is equal to 1 to 3 dash dash. Since the limiting value of the diameter of En Cloyer is equal to 0. यहाँ पे definition लगाएंगे convergence की. For a given epsilon greater than 0, there exists a positive integer n naught such that diameter of En Cloyer is less than epsilon. If I will choose an integer m naught, so I will take for all n greater than or equal to. तो यूनिक पॉइंट था वो कि इसमें ले लिया इंटरसेक्शन में, इसका मतलब हर एक में आएगा. अब डायमीटर 0 है तो डायमीटर क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन. एक्चुअली हम वर्क कहाँ पे कर रहे हैं? हमने एक कॉची ली थी बेटा, मुझे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ढूंढना है इसके लिए, ठीक है जी. अब P किस में आ रहा है? P जो हमने एक्चुअली प्रूव क्या करना है कि जो यूनिक पॉइंट था, जो एक यूनिक पॉइंट था इंटरसेक्शन का, वही किसका काम करेगा? लिमिट का काम करेगा. किसकी लिमिट का? Pn की लिमिट का. नाउ P बिलोंग्स टू, P किस में है? En क्लोयर में, ठीक है जी. It implies distance between P and Q is less than epsilon for all Q belongs to En Cloyer and for all n greater than or equal to n naught. अब आपके पास diameter of En Cloyer क्या आ रहा है? Less than epsilon आ रहा है. Diameter of En Cloyer का मतलब क्या है कि जितने भी points En Cloyer में पड़े हुए हैं उनका जो distance है वो क्या है? Less than epsilon है. ठीक है जी. तो यहाँ पे P ऑलरेडी था, Q एक और उठा लिया, दोनों का डिस्टेंस क्या लगा दिया? लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों पॉइंट्स किस में आ रहे हैं? En क्लोयर में, और डायमीटर ऑफ En क्या है? लेस देन क्लोयर, लेस देन एप्सिलॉन, राइट. It implies distance between P and Q is less than epsilon for all Q belongs to En, क्योंकि En is always contained in En क्लोयर. ठीक है, तो अगर Q पॉइंट En क्लोयर में आ रहा है, इट मींस Q किस में आ रहा है? En में आ रहा है. फॉर ऑल n greater than or equal to m naught. So it implies the distance between P and Pn. ये सारे Q कहाँ से आ रहे हैं? En में से. अब आप ये देखिए भी En के एलिमेंट्स की फॉर्मेशन क्या है? En plus 1, En plus 2 dash. इन सबका एक कॉमन नाम, एक जनरल जो जनरलाइज करने के रखा वो क्या था? Q1. एक्चुअली क्या है ये? Pn plus 1, Pn plus 2, so on up to. इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ से क्या आया? डिस्टेंस बिटवीन P and Pn is less than epsilon for all n greater than or equal to m naught. So what is the definition? It implies Pn is converging to P. Therefore, this was the Cauchy sequence, and this has been become the convergence sequence. That's all. Haji, is it clear?